structure is synonymous with the will of the political party. An alternate submission was made that even if the Paksha Pramukh is not accepted as the repository of the will of the political party, the decision of the leadership structure has to be construed as synonymous with the will of the political party. This proposition is also devoid of merit, and I do not find any substance in it for following reasons. In a circumstance where there is no dispute amongst the leaders identifiable by the constitution of a political party, the proposition would have held water. However, the factual matrix of the present matter is different. This is a matter where there is a dispute within the leadership structure itself. It is to be noted that in the present matter, rival factions have emerged in the legislature party, political party, and thus inevitably amongst leaders of the party as well. Thus, it would not be wise to apply this proposition in the present matter. The existence of split stroke rift in the leadership structure is admitted by the petitioner and or the UBT faction, as can be inferred from the petitioner's affidavit in lieu of examination in chief of PW1, petitioner himself, that the leader of the UBT faction did not have the support of all the members of the 2018 leadership structure when rival factions emerged. Thus, the submission that the decision of the leadership structure has to be construed as synonymous with the will of the political party could have perhaps be applied in a situation where there is a dispute between some members of the party and the elected leadership. In such a case, the leadership of the party could have possibly taken the stand that their decision would have to be taken as the decision and will of the political party until they are so removed from the leadership structure by a mechanism recognized by the constitution of the said political party. However, as I have noted earlier, in the present matter, rival claims have emerged wherein the leadership structure about the leadership within the leadership structure about the leadership itself. In such a situation, one leader's contention that his will is the will of the political party would be contradiction in terms. Thus, when there is a vertical rift in the party and two factions within the said leadership structure emerge as a result of the said rift, leaders of either faction, both Shri Uddhav Thackeray and Shri Eknath Shinde, could equally claim to represent the will of the political party. In that case, it would not be appropriate to take their decision as the decision that carries the will and wish of the political party when the question of which faction is the political party is being considered. There possibly lies one more aspect which could be considered. Does the stand-stroke decision of the majority members of the leaders within the leadership structure, identifiable and appointed according to the constitution of the political party, could be construed as the will and desire of the political party in the event there is a dispute within the leadership structure? For the purpose of answering this question, one must look into the constitution of the political party. In an event where the party constitution provides for a mechanism to resolve a conflict of decision within the leadership structure, then in that case it would have been a guiding factor. However, if the party constitution does not provide for such a mechanism, then in that case it would not be appropriate to say that the decision of the majority leaders would have to be accepted as the one which conveys the will of the political party. This aspect need not be further considered in view of the fact that in any case UBT faction has not placed any material on record or even suggests that any meeting of the Rashtriya Karyakarni was called for where any decision in relation to the real political party was resolved so as to identify the leaders and or the whip who carried the will of the political party. Thus, in the absence of any such material, including any majority decision of the Rashtriya Karyakarni in relation
to the real political party, identifying the leader and or the whip who carried the will of the political party would be an impossible task. Any conclusion reached would be without basis in law and evidence of fact. The submission that the UBT faction shall be taken as a real political party is entirely based on the conjuncture that if there will be a decision taken in relation to the political party by Rashtriya Karyakarni, then UBT faction would have had the majority. At this juncture, the petitioner's claim about a meeting purportedly held on 25th June 2022 has to be dealt with. It is the petitioner's case that Rashtriya Karyakarni meeting was held on 25th June 2022 and certain resolutions were passed. In support of this case, petitioner has produced certain resolutions of 25th June 2022. Those documents are disputed by respondents. Mr. Jetmalani, learned counsel for respondent, objected to the said documents being considered on the ground that they were forged and fabricated, and demonstrated this before me by showing two separate documents, one annexed by the petitioner Shri Sunil Prabhu to his affidavit in lieu of examination of in chief, and the other set of the same documents which are annexed to the Supreme Court Convenience Compilation Volume 2. In the first set of documents annexed to the affidavit in lieu of examination in chief, termed as minutes of the meeting of Rashtriya Karyakarni, and purportedly 7 resolutions passed in the said meeting. In none of the resolutions there is any signature of any person whose name are shown on the said document. Only on page 105 of Sri Sunil Prabhu's affidavit in lieu of examination in chief, there is a sole signature of Sri Vinayak Raut, who is shown as Shiv Sena secretary. The perusal of the said document shows that the meeting was termed as Rashtriya Karyakarni. In the second set of documents, तो ये इस समय की आप बड़ी खबर देख रहे हैं, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, महाराष्ट्र सरकार के फैसले से जुड़ी हुई है। स्पीकर राहुल नार्वेकर अपना जो फैसला है वो पढ़ रहे हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि मैं चुनाव आयोग के फैसले से बाहर नहीं जा सकता, ये राहुल नार्वेकर का कहना है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट असली शिवसेना है, उनका ये कहना है। तो ये इस समय अपना जो पूरा जजमेंट है वो पढ़ रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो 1999 का जो संविधान था शिवसेना का वो मान्य होगा, जो 2018 का था संशोधित था वो मान्य नहीं होगा, ये राहुल नार्वेकर का कहना है। आपको जानते हैं ये पूरा जो मामला ऐसा था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो स्पीकर है क्यों उसने अपना फैसला इतनी देर से लंबित रखा हुआ है। तो आज राहुल नार्वेकर सुना रहे हैं और उस शिंदे गुट को एक तरह से असली शिवसेना बता रहे हैं। तो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा है कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। शिवसेना के 2018 के संशोधित संविधान को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि ये भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में है ही नहीं। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार मैंने वैध संविधान के रूप में शिवसेना के 1999 के संविधान को ध्यान में रखा है। तो 16 विधायकों की अयोग्यता पर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर अपना फैसला पढ़कर सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना का 1999 का संविधान मान्य है। 1999 में संविधान पर दोनों पक्षों को भरोसा था। स्पीकर ने कहा चुनाव आयोग के सामने पेश संविधान ही मान्य है, स्पीकर का कहना रहा है। उन्होंने ये कहा है कि जो उन्होंने वो ठुकराया 2018 का जो संशोधित संविधान था। और एक ये महत्वपूर्ण बात भी सामने आई है कि इस पे उनका ये कहना है कि शिवसेना में जो प्रमुख है, पक्ष प्रमुख है, वो फैसले नहीं ले सकते, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसके साथ मिलकर ही फैसले लिए जा सकते हैं। तो ये एक तरह से उद्धव गुट की बड़ी शिकस्त है और श्रीकांत शिंदे सरकार जो है उसके लिए बड़ी जीत मानी जा रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ सुनील सिंह मौजूद हैं। सुनील, तो अपने आप में एक तरह से रुख तो साफ हो गया है कि जो शिंदे गुट है वही असली शिवसेना है। बिल्कुल निधि, रुख वैसे देखा जाए तो पहले से साफ था, जैसे एकनाथ शिंदे ने दोपहर में मीडिया से बात करते हुए बताया था, और बिल्कुल वही निकला जैसा कि माना जा रहा था कि जो है चुनाव आयोग का जो फैसला रहा है पार्टी के बंटवारे में, चुनाव चिन्ह और पार्टी चूंकि उनको दे गई, तो
तो वही फैसला आधार माना जाएगा। और बिल्कुल उसी फैसले को हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं आधार मानते हुए विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो अपना फैसला सुना रहे हैं। लगभग 5:20 पर उन्होंने शुरू किया था फैसला पढ़ना और अभी भी पढ़ रहे हैं वो फैसला। और उसमें जो अब तक का लबोलुआब निकल कर ये आया है कि शिवसेना ने जो उद्धव ठाकरे गुट ने जो दावा किया था कि 2018 में उनके संविधान में संशोधन हुआ था, वो इलेक्शन कमीशन के यानी चुनाव आयोग के पास नहीं है, यानी वो अमान्य कर दिया गया है। तो उन्होंने 1999 का जो पुराना संविधान है शिवसेना का वही माना है। और उसमें जो था, जो सबसे बड़ी बात उन्होंने इंगित की है वो ये है कि उसमें शिवसेना के जो पार्टी प्रमुख हैं उनको शिवसेना प्रमुख कहा जाता था, जबकि 2018 में ये पक्ष प्रमुख बनाया गया। तो चूंकि शिवसेना प्रमुख ही पार्टी का सर्वोच्च है और वही उन्हीं को अधिकार था कि जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अगर कोई फैसला होता है, कार्य समिति कुछ फैसला लेती है तो उसे वो बदल सकते थे। तो वो चूंकि अभी है नहीं और पक्ष प्रमुख जो हैं उनको वो अधिकार नहीं है क्योंकि उसका संशोधन मान्य नहीं रहा, लिहाजा जो भी फैसला एकनाथ शिंदे के साथियों ने जो लिया उसको पलटने का अधिकार कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे को नहीं था। और ये बात और जब इसकी सुनवाई के दौरान जो पक्ष रखना चाहिए था वो भी सब अपने दस्तावेज पेश नहीं कर पाए या अपने पक्ष ठीक से नहीं रख पाए। तो अभी तक का लबोलुआब है कि इस पूरे मामले में एकनाथ शिंदे गुट का जो पलड़ा है वो भारी होता दिखाई पड़ रहा है और कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे जो है यूबीटी जिन्होंने कहा है वो कहीं न कहीं कमज़ोर होता दिखाई पड़ रहा है। तो फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन उसका संकेत हमें साफ यहाँ पर मिल रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि क्या हो सकता है फैसला। बिल्कुल ये संकेत साफ मिल रहे हैं। और चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, ये उन्होंने कहा। साथ ही ये भी एक चीज कही कि बाला साहब की वसीयत पार्टी की वसीयत नहीं है, सिर्फ ठाकरे को नापसंद इसलिए शिंदे को नहीं हटा सकते, ये भी एक भाव सामने रखा गया। जी बिल्कुल, ये एक तरह से हम इसे कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन या टिप्पणी के तौर पर इसे ले सकते हैं, क्योंकि जो वसीयत है पार्टी जो है वो संविधान से चलती है और उसको तो चुनाव आयोग में उसे देना होता है और चुनाव आयोग उस चीज़ों को अपनी तरफ से एक तरह से हम कह सकते हैं कि पुष्टि करता है। तो यहाँ पर जो संविधान जो देना चाहिए था पार्टी में, जो संशोधन किया गया 2018 में और उद्धव ठाकरे को पक्ष प्रमुख बनाया गया, तो वो जो है परिवर्तन वो देना वहाँ पर चाहिए था, जो कि दिया नहीं गया था, लिहाजा उसे वो मान नहीं रहे हैं। और चूँकि संविधान का जो संशोधन है वही मान नहीं हुआ पार्टी का, तो जो पार्टी की जो पदाधिकारी की जो सूची होती है तो वो जो उसमें भी जो है कि उसको मान्य नहीं किया गया, तो सब 1999 का माना जा रहा है। लिहाजा यही वजह है कि जो पढ़ रहे हैं अब तक जो जानकारी उभर कर आ रही है कि एकनाथ शिंदे ग्रुप ने जब फैसला लिया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति बुलाई, बैठे, उन्होंने अपने आप को नेता चुन लिया, तो उस फैसले को पलटने का अधिकार उद्धव ठाकरे को नहीं है, क्योंकि जो पार्टी पोजीशन जो थी, जिसको अधिकार था, वो पद जो है कि रिक्त पड़ा हुआ था एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि वो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे थे जो कि स्वर्गवासी हो चुके हैं, तो वहाँ पर कोई पद नहीं था। ये कहीं न कहीं एक संदर्भ निकल कर आ रहा है और पक्ष प्रमुख जो को वो अधिकार नहीं था, इसलिए उद्धव ठाकरे का लिया वो फैसला मान्य नहीं किया जा सकता। ये एक तरह से उनका साफ तौर पर संकेत है कि वसीयत एक अलग चीज़ है, संविधान अलग चीज़ है। तो वसीयत को आधार बनाकर पार्टी नहीं चलाई जा सकती, संविधान के अनुसार पार्टी चलाई जा सकती है, ये कहीं न कहीं कहने की कोशिश की है।